Hello and good morning everyone. Welcome to my channel, and today we are going to solve the practice questions of exercise number 1 of the course Linear Algebra, which I had given you guys in the last lecture. Okay, now let's start with the question number 1. Question number 1 में we have given matrix A, which is of order 2 cross 3, and the matrix B is also of order 2 cross 3. And we have to find the matrix 3a minus 2b. Okay, and for that what we have to find here is the matrix 3a minus 2b. Okay, first we need to find the matrix 3a. We multiply the scalar 3 with the matrix A, and after that we multiply the scalar 2 with the matrix B, and then we subtract these two matrices. You can do that in one step, like you directly can put the values of the matrices A and B here in this whole matrix, or if you want you can separately solve these two matrices, and after that you have to take the you have to subtract these two matrices. Okay, first I'm going to find the value of matrix 3a. Multiply the scalar with the matrix A is, what is the matrix A here? 2, 4, 8, minus 1, 6, minus 3. And you know that when a scalar is multiplied with the matrix, the scalar is multiplied with the each entry or element of the matrix, like that. 3 multiplied by 2, 3 multiplied by 4, and 3 multiplied by 8, and 3 multiplied by minus 1, 3 multiplied by 6, and 3 multiplied by minus 3. We get the matrix 3a. Now this is also of order 2 cross 3. This is matrix 3a, and similarly we can find the matrix 2b by multiply the scalar 2 with the matrix B, and our matrix B here is 3, 2, minus 5, 1, 7, and 0, and it is the matrix 3 is also of order 2 cross 3. And again the scalar 2 is going to multiply with the each element of the matrix B. 2 multiplied by 3, 2 multiplied by minus 5, 2 multiplied by 7, then 2 multiplied by 2, 2 multiplied by 1, and 2 multiplied by 0. And we get the matrix 2b, which is equals to 6, 4, minus 10, now we get these two matrices 3 and A and 2b. Now we need to subtract these two matrices 3a minus 2b. We can see here that the order of both these matrices are same. 3a का भी हमारे पास order 2 cross 3 है, और 2b का भी हमारे पास order 2 cross 3 है. ऑर्डर सेम है तो हम दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 3a हमने फाइंड किया है 6 minus 3, 12, 18, 24 and minus 9. सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से मैट्रिक्स 2b को, which is 6, 4, minus 10, 2, 14 and 0.
Now we can subtract these two matrices by subtracting the corresponding entries or elements of these two matrices. 6 minus 6, 12 minus 12, minus 10, and 24 minus 14, minus 3, minus 4, and 18 minus 2, and minus 9, minus 0, and this is 12 minus plus 10. 12 plus 10 equals to 22, and 24 minus 14 is 10. This is minus 7, this is 16, and this is minus 9. So we get our 2 cross 3 matrix. Now let's solve question number 2. In question number 2, the matrix A, B, and C are given to us, and we have given the condition that 3A equals to B plus C, and we have to find the values of the variables x, y, z and t. ओके स्टूडेंट्स, हम हमेशा जो है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं कि हमें क्या चीज़ गिवन है, हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ फाइंड करने के लिए जो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए हमें कंडीशन गिवन है दैट 3a इक्वल्स टू b प्लस सी। हम इस कंडीशन को यूज़ करते हुए अपनी अननोन वैल्यूज़ की, अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब हमारे पास गिवन है दैट 3a इक्वल्स टू b प्लस सी। Here is the second question. Okay, we have given that 3a equals to b plus c matrix. This condition is given to us. अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी जो गिवन मैट्रिसेस हैं ए, बी और सी, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे गिवन कंडीशन में। देन व्हाट विल वी गेट हियर? 3 matrix A is x, y, z and t equals है, write the matrix B here which is x minus 1 and 6 2t plus we have matrix C which is 4 z plus t, x plus y and 3. First we have to multiply the scalar 3 with this matrix. And how we'll do it? We multiply the matrix, the scalar 3 with each element of this matrix. 3x, 3y, 3z and 3t. And on the right hand side what we do here is we add these two matrices. How? By simply adding the corresponding elements or entries of the two matrices. X plus 4, 6 plus x plus y, this entry added to this entry, and then minus 1 plus z plus t and 2t plus 3. Okay, now what we have to do, in order to find the values of the unknown, we equate these two matrices. We know that the two matrices are equal if their each corresponding entry is equal. So as these two matrices are equal,
We can equate the corresponding entries of these two matrices such that 3x equals to x plus 4 by equating the first entry 3x equals to x plus 4 and 3y equals to 6 plus x plus y and 3z equals to minus 1 plus z plus t and the last entry 3t equals to 2t plus 3. By solving these equations, we can easily find the values of the variables. We can given the name of all these equations, we can say that this is the equation number 1, this is the equation number 2, this is the equation number 3, and this is the equation number 4. Now by solving equation number 1, we get the value of x. You can see as 3x minus x equals to 4. This is what this equation number 1 gives us, this value. Now 3x minus x equals to 2x equals to 4, and from here we get the value of our variable as 4 divided by 2, x equals to 2. So x equals to 2 is the value of x. Next, we can find the value of y by using equation number 2. Equation number 2 gives us, implies that 3y equals to 6 plus x की जगह हम x की वैल्यू जो हमने फाइंड किया वो पुट करेंगे. x is replaced by 2 plus y, and this implies 3y minus y equals to 6 plus 2 plus y minus y. We subtract y on the both sides. From here we get 3y minus y equals to 2y equals to 6 plus 2, 8. And we get the value of y as 4. And for the value of z and t, we can see that in the equation number 3, we have the two variables z and t. From here, we cannot directly find the value of one variable. So first we use equation number 4. From here, we can directly find the value of t. And from equation number 4 implies that 3t minus 2t, subtract minus 2t on both sides, 2t plus 3 minus 2t, and 3t minus 2t, we get t equals to, these two t's are cancelled, and we get the value of t equals to 3. And now we can find the value of the last variable, which is from equation number 3. Equation number 3 implies that 3z equals to minus 1 plus c plus t. You have to put the value of t in this equation, and also we subtract z on both sides, minus 1 plus z minus z plus, and put the value of t, which is 3.
So 3z minus z equals to 2z equals to minus 1 plus 3, and 2z equals to 2, and from here we get the value of z, which is equals to 1. So we get the values of all the three variables by using the given condition, the matrices. Now we are going to solve question number 3. Okay, question number 3 is, we have given two matrices here. Let A equals to, A is given to us, which is a 2 cross 3 matrix, and also the matrix B is of order 2 cross 3, and we have to find the value of A transpose B. For that, what we have to do, first we have to find the transpose of the matrix A, then we multiply the answer of that matrix A transpose with the matrix B. Okay, to find the A transpose, what we have to do, we have to make the first row of the matrix A, make it the first column of the matrix A transpose. How? You can see here that the first row is 1, minus 1, 2, and we write it as its first column 1, minus 1, 2. And the second row of the matrix A can be written as the second column of the matrix A transpose. Now as this is order 2 cross 3 मैट्रिक्स से ऑर्डर भी हमारा ट्रांसपोज लेने के बाद इसकी इंटरचेंज हो जाएंगी रोज एंड कॉलम्स की वैल्यू. Now we get the matrix A transpose. Now we have to multiply A transpose with the matrix B. Now A transpose multiply with the matrix B equals to 1, minus 1, 2, 0. This is of order 3 cross 2. We multiplied it with the matrix B, and matrix B is 4, minus 1, 0, minus 2, minus 3, and 3. And this is of order 2 cross 3. Okay, you can see here that the rows, the number of column of the first matrix is equal to the number of rows of the second matrix. So the multiplication of these two matrices are possible. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ट्रांसपोज लेने में मैट्रिक्स के या मल्टीप्लिकेशन में कोई डिफ़िकल्टी होती है तो मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था हाउ टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड हाउ कैन वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस. जिसमें हमने बताया था लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कि टू राइट द फर्स्ट entry of this matrix, what we have to do, we multiply the first row of first matrix with the corresponding elements of the first column of the second matrix, and then we add these two entries. Now 1 multiplied by 4, which is 4, this multiplied by this, plus this value multiplied by this value, which in that case is 0. And similarly for this entry, we multiply this row with the first row second column. 1 multiplied by 0, 0, and 0 multiplied by minus 2 is 0. Then for this entry, multiply this row with this column, the corresponding entries को multiply करेंगे और उनको add करेंगे. 1 multiplied by minus 3 and plus 0 multiplied by 3, which is 0. And similarly for our second row के लिए हम second row लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की
और उसको पहले सबसे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -4, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, प्लस -3, -1 multiplied by 4 plus 3 multiplied by -1. Then we multiply the second row with the second column. -1 multiplied by 0 is 0, and 3 multiplied by 2 is -6. Then -1 multiplied by -3 is 3, and plus 3 multiplied by 3, 9. Similarly, for the last row, we multiply this row with the corresponding columns. 2 multiplied by 4, 8, plus -4, इस लास्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 multiplied by 0 0, plus 4 multiplied by -2 is -8, 2 multiplied by -3 -6, and plus 4 multiplied by 3 is 12, which is equals to 4 0 -3 -7 -6 12, 4 -8 and 6. So this is a order 3 cross 3. So this is our answer. This is the value of the matrix A transpose B. एक शॉर्ट सी मैं टिप देती हूँ स्टूडेंट्स कि अगर हमने किसी भी टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आंसर है, उसकी किसी भी अगर मैं पर्टिकुलर एंट्री की बात करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एंट्री ले लेती हूँ 12, इसकी पोजीशन हमारे पास क्या है, इस 12 एंट्री की पोजीशन है मेरे पास, अगर मैं जनरल इसको किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करती हूँ ए, और इसकी पोजीशन लिखती हूँ दिस इज ऑफ इन द रो 2 एंड कॉलम 3, तो इसकी पोजीशन है मेरे पास सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई जो करते हैं उसकी हमने 2 3 पोजीशन पे हमने एंट्री फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने फर्स्ट मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई करना है उसकी सेकेंड रो देखनी है विच इज दिस, और उसको अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है सेकेंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ विच इज दिस। इनको हमने फॉर दिस एंट्री यू हैव टू मल्टीप्लाई this row with this column. You can see here that -1 into -3 plus 3 multiplied by 3, which is equals to 3 plus, which is equals to 12, which you can see here. Let's start with the question number 4. And question number 4 है मेरे पास, we have given a matrix E1 which is equals to 1 0 0, and this is of order 1 cross 3, and second matrix E2 is given to us, and it is also of order 1 cross 3 because it has 1 row and 3 columns, and the third matrix E3 is also of order 1 cross 3 which is 0 0 1, and we have also given a matrix capital A which is of order 3 cross 4 because it has 3 rows and 4 columns, and we have to find the matrix E1 EA, E2A and E3A. Now let's start this solution. Okay, first we have to find first matrix which is E1A. Simply we have to multiply these two matrices E1 multiplied by A. First we write the matrix E1 which is 1 0 0, and we write its order which is 1 cross 3, and the matrix A is A1 A2 A3 A4,
B1, B2, B3 and B4, and the third row is C1, C2, C3 and C4. Now this matrix A is of order 3 cross 4. First of all, we see here that is the multiplication of these two matrices are possible? Then yes, it is, because this and this, these two numbers are same, so we can multiply these two matrices. और अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी देखा था कि क्या निकलेगा हमारे पास. जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर मेरे पास आएगा 1 क्रॉस 4. हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 1 क्रॉस 4 मैट्रिक्स होगा. अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. वी गेट हियर सबसे पहले फर्स्ट रो है 1 मल्टीप्लाई बाय A1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय B1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय C1. फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई किया है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम की और उनको ऐड कर दिए. फॉर द सेकेंड एंट्री फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ एंड देन वी ऐड देम. 1 मल्टीप्लाई बाय A2 plus 0 multiplied by B2 plus 0 multiplied by C2. Then for the third entry, 1 multiplied by A3 plus 0 multiplied by B3 plus 0 multiplied by C3 is 0, 0. And for the last entry, we have 1 multiplied by A4, which is A4, plus 0 multiplied by B4 plus 0 multiplied by C4 is 0 and 0. And as we only have one row here, we cannot further multiply these two matrices, so we have only left with the values A1 plus 0, 0, A2, A3 and A4. So you can observe here that the resultant of the required matrix is of order 1 cross 4. So E1A is of order, our required matrix of order 1 cross 4. Similarly, we can find the other two matrices E2A and E3A. Okay, to find the matrix E2A, which is equals to E2 here, what E2 is 0, 1, 0, and the matrix A is A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, and C1, C2, C3, and C4. Again, E2 is of order 1 cross 3 and it is of order 3 cross 4 matrix A, and we can multiply these two matrices because the number of column of this matrix is equal to the number of row of the second matrix. So we multiply it. 0 multiplied by A1, 0, plus 1 multiplied by B1, B1, plus 0 multiplied by C1, 0. फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एंड देन वी add these elements. Next we have multiply this row with the second column. 0 multiplied by A2, 0, 1 multiplied by B2, B2 plus 0 multiplied by C2, 0. And for the third entry, 0 multiplied by A3, 0, plus 1 multiplied by B3, B3 plus 0 multiplied by C3, 0. And for the last entry, 0 multiplied by A4, 0, plus 1 multiplied by B4, B4,
plus 0 multiplied by C4 is 0. And we get our required matrix is B1, B2, B3 and B4, which is of order 1 cross 4. And our last required matrix is E3A, which is equals to, what is E3 here? 0, 0, 1, which is of order 1 cross 3, and we multiply it with the matrix A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 and B4, C1, C2, C3 and C4, and it is of order 3 cross 4. And the required matrix is, we multiply it again, this one with this one. 0 multiplied by A1 0 plus 0 multiplied by B1 0 plus 1 multiplied by C1 is C1. Again multiply this row with the second column, we get the 0 plus 0 plus C2. And for the third entry, we multiply this row with the corresponding entries of the third column, which is 0 plus 0 plus C3. And for the last entry, multiply this row with the fourth column, 0 plus 0 plus C4. So this is our C1, C2, C3 and C4, which is of order 1 cross 4. So here is the final solution of our question number 4. Now let's see question number 5. Okay, what is the question number 5 here? Let A equals to diagonal 235, B equals to diagonal 70 minus 4. Find A multiplied by B. अब आपने ये जो है टर्म DIAG, दिस स्टैंड्स फॉर डायगोनल, ये पहले हमने नहीं देखी. इस क्वेश्चन में ही मैं आपको इसका बताती हूँ कि क्या मीनिंग है. अच्छा, हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है डायगोनल. हमने पूरा डायगोनल नहीं लिखना, सिर्फ फर्स्ट 4 लेटर्स लिखने हैं हमने डायगोनल के वर्ड के. दिस एक्चुअली मीन्स that matrix A is a diagonal matrix with the elements in the diagonals which are 2, 3, 5. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको इसकी फॉर्म 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 5. So this is the actual matrix A, which can also be written in this form. Diagonal के जो मेरे पास elements हैं, these are 2, 3, 5 and all the other entries of the matrix are 0. We know that the diagonal matrix is the square matrix, इसलिए मैंने यहाँ पे square matrix लिया है. Okay, और matrix B हमें given है diagonal 7, 0 and minus 4. और मैट्रिक्स बी का भी ऑफ कोर्स दिस काइंड ऑफ, अगर मैं इसमें लिखूँ वैसे ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आप लिख रही हूँ. आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको इस फॉर्म में लिखना ज़रूरी नहीं है. दिस इज़ द मैट्रिक्स बी एक्चुअली. This is the matrix B with the diagonal elements 7, 0, minus 4. Now what we have to find the multiplication of these two matrices, A multiplied by B. तो किसी भी डायगोनल एलिमेंट्स के डायगोनल मैट्रिसेस के लिए अगर हमने उनको मल्टीप्लाई करना हो तो हमारे पास उनकी मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, ए बी मैट्रिक्स आएगा, उसमें वो सिंपल हम उनके डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उन पूरे मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी. कैसे? वी कैन फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ these two matrices A and B by simply multiply
the corresponding elements of the diagonals. डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट है 2 a का और b डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट है 7, तो हमारे पास ए बी मैट्रिक्स के डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, इसी तरह सेकेंड एलिमेंट होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0. Similarly, the third element is 5 multiplied by minus 4, which is equals to 14, 0 and minus 20. So this is simply the answer of the multiplication of the matrices A, B. This is the answer, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसकी this is matrix A, this is matrix B, और our matrix A, B किसके इक्वल आया है 14, डायगोनल एलिमेंट, सेकेंड डायगोनल एलिमेंट है मेरे पास 0 और थर्ड डायगोनल एलिमेंट है मेरे पास -20. So this is a shortcut to multiply the diagonal matrices. This is simply the answer of our question number 5. एक छोटा सा पॉइंट यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर हम बात करें ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की, whether it's an upper triangular matrix or whether it's a lower triangular matrix, तो टू ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसके जो डायगोनल में एलिमेंट्स आएंगे वो भी उन दोनों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के रिस्पेक्टिव डायगोनल्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो उसकी मल्टीप्लिकेशन का डायगोनल होगा वो सिंपल उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास उसका डायगोनल आ जाए. ओके, our question number 6 is find real numbers x, y, z such that A is Hermitian. We have to find the values of the unknowns x, y, z, and a matrix, a 3 cross 3 matrix is given to us, and our given condition is that the matrix A is Hermitian. Solution देखते हैं इसका. अच्छा, हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए मेरे पास क्या कंडीशन होती है, एज ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स तो इट मस्ट फुलफिल द कंडीशन दैट ए इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज. So first of all, the matrix A is I write here, I already written here the matrix A, and now we have to find the A conjugate, then we find A conjugate का ट्रांसपोज, और ये तीनों की वैल्यूज A conjugate और A conjugate सॉरी A की और A conjugate ट्रांसपोज की वैल्यू हम अपनी इस given condition में पुट कर देंगे. Next we have to find the value of A conjugate which is equals to A conjugate में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कॉन्जुगेट जो है वो क्या होता है, किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही रहता है और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका कॉन्जुगेट में सिंपली क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है. तो 3 का कॉन्जुगेट 3 रहेगा, x प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट मेरे पास हो जाएगा x माइनस 2 आयोटा, और y आयोटा भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, आयोटा साथ जिसके मल्टीप्लाई होता है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाता है मेरे पास, और ये माइनस y आयोटा हो जाएगा. हम a के ऊपर जो कॉन्जुगेट ले रहे हैं इसका मतलब है कि मुझे a मैट्रिक्स की हर एलिमेंट या हर एंट्री का कॉन्जुगेट लेना है. अब नेक्स्ट मेरे पास 3 माइनस 2 आयोटा का जब मैं कॉन्जुगेट लूँगी तो इसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है माइनस 2 आयोटा उसका साइन चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट 0 0 रहेगा, यहाँ पे z आयोटा मेरे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का तो z आयोटा का साइन चेंज होगा, y आयोटा का साइन चेंज होगा, यहाँ पे x आयोटा का साइन चेंज होगा, और रियल नंबर रिमेन्स सेम. Next what we have to do, next I'm going to take the transpose of this A conjugate. ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि जो रो है मैट्रिक्स की, हमारे मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है उसको हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं ट्रांसपोज लेने के लिए. 3x माइनस 2 आयोटा एंड माइनस y आयोटा. जब हमने ट्रांसपोज लिया है तो इसकी फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन गई है. अब हम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम की तरह लिखेंगे.
3 plus 2 iota 0 and 1 minus z iota. सिमिलरली थर्ड रो को मैं थर्ड कॉलम की फॉर्म में लिखूंगी माइनस वाई आयोटा एंड 1 प्लस एक्स आयोटा एंड -1. तो ये मेरे पास आ गया है ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज. नाउ अब जो गिवन कंडीशन है उसको मैं 1 का नाम दे देती हूँ. तो कंडीशन 1 implies ए मैट्रिक्स लिखूंगी सबसे पहले which is 3 minus 2 iota y iota x plus 2 iota 0 1 minus x iota and y iota 1 plus z iota and -1. ए किसके इक्वल है? ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के. और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैंने ये फाइंड किया है, इसको मैं इक्वेट कर दूंगी इसके साथ. दिस इज 3x minus 2 iota minus y iota 3 plus 2 iota 0 and 1 minus z iota minus y iota 1 plus x iota and -1. Okay, now we get the two matrices which are equal. इक्वल मैट्रिसेस के लिए मेरे पास क्या कंडीशन होती है कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ द एंट्री ईच कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल. तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एंट्री फर्स्ट इस पोजीशन की एंट्री इक्वल होगी इसके 3 equals to 3 which is not our interest. हमें एक्चुअली फाइंड करने हैं अपने to find we have to find the value of the variables x y z and t. सेकंड मैं इस एंट्री को जब कंपेयर करूँगी दिस एंट्री x प्लस 2 आयोटा किसकी इक्वल होगी 3 प्लस 2 आयोटा की. तो यहाँ से मेरे पास इक्वेट करके इक्वेशंस आ जाएंगी. x प्लस 2 आयोटा किसकी इक्वल आएगी मेरे पास 3 प्लस 2 आयोटा के. और यहाँ से मैं फाइंड कर सकती हूँ वैल्यू ऑफ x. I can subtract 2 iota on both sides. ये कैंसिल हो गया तो x इक्वल्स टू 3. फर्स्ट अननोन या फर्स्ट वेरिएबल की मेरे पास वैल्यू आ गई है. तो नेक्स्ट मुझे हर वैल्यू को कंपेयर करके लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ अपने जो रिक्वायर्ड वेक्टर है जो हमें रिक्वायर्ड वेरिएबल है सिर्फ हम अपने वो इंटरेस्टेड एलिमेंट्स को कंपेयर करके वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे अननोन की. नेक्स्ट अगर हम देखें तो y आयोटा को कंपैरिजन करें इसलिए हमें कोई वैल्यू गिवन 3 माइनस 2 आयोटा x हम आ चुका है. इसको भी कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी ऑलरेडी गेट द वैल्यू ऑफ x 0 0 के साथ. Okay, yes, we can compare these two values to find the value of c, this and this. Okay, I can write here that 1 plus z iota equal है 1 plus x iota के. तो यहाँ से 1 से कैंसिल हो जाएगा. या I can also say that subtract 1 on the both sides. मेरे पास आ जाएगा z iota equals to x iota. तो कंपेयर करूँगी मैं यहाँ से मेरे पास आएगा z equals to x and z equals to 3. z वेरिएबल की वैल्यू भी मेरे पास आ गई है. नेक्स्ट मेरे पास 2 अननोन रह गए हैं y नहीं just 1. Okay, we just have to find the value of y. Okay, now to find the value of y we can compare either these two values or these two values, whichever these or both the values are same. तो हम अगर इसको लेते हैं that y आयोटा इक्वल है माइनस y आयोटा के. तो यहाँ पे y आयोटा यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसको यहाँ ले आएंगे प्लस y आयोटा इक्वल्स टू 0. or you can say that add plus y iota on the both sides.
यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू 0 आ जाएगी. So we get the values of all the three variables. Okay students, that is it for the today's lecture, and we are left with our three questions, three practice questions, question number 7, 8 and 9. If you found the lecture helpful, please like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. Thank you for watching. Take care.